So this is the question number 4 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic Boolean Algebra. So in this particular question, a Boolean variable with the name S has been given to you, and it has been asked out of the given four statement which one is incorrect regarding the OR loss. Okay. So in order to answer this one, first of all we need to draw a truth table. So let's say we have two variables and its output would be y. तो अगर मैं बात करूं दो boolean variables की तो we have two boolean variables a and b. So for two boolean variables we have four possible sequences. We will have 0 0 0 1, again we have 1 0 and then 1 1. For 0 0 output would be 0, for 0 1 output would be 1 and 1. Now let's see the statements by statement and try to figure out which one is incorrect and which one is correct. तो अगर मैं बात करूं पहले वन की तो पहला क्या कह रहा है आपका, अगर आप किसी भी बुलियन वेरिएबल के अंदर वन ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू सिमिलर आएगी. दैट मीन्स इट इज ट्राइंग टू से कि अगर एच की वैल्यू मेरी जीरो है तो इट शुड गिव जीरो, अगर एच की वैल्यू वन है तो इट शुड गिव वन. सो दिस वन इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज अगर आप किसी भी वेरिएबल में वन ऐड करोगे तो आप देखिए चला ये, अगर इसमें किसी भी वेरिएबल में आप वन ऐड करोगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, वन आएगा. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट नंबर ए इज इनकरेक्ट. नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, s प्लस वन इक्वल्स टू वन. इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वन ऐड करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट वन. ओके, तो दिस वन इज करेक्ट. व्हाई? बिकॉज जस्ट इट इज द कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द ऑप्शन नंबर ए. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, s प्लस वन इक्वल्स टू एस वाली गलत हो गई, और ऑन द अदर हैंड जो ऑप्शन नंबर बी वाली स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी, करेक्ट है. नाउ सेकंड वन, इट इज सेइंग s प्लस जीरो इक्वल्स टू s, यानी कि अगर आप जीरो में जीरो ऐड करोगे तो यू विल हैव जीरो, अगर आप वन में जीरो ऐड करोगे तो यू विल हैव वन. यू कैन सी फ्रॉम द ट्रूथ टेबल ये आपकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जीरो प्लस जीरो इज जीरो एंड वन प्लस जीरो इज वन. ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट वन. लास्ट वन इज सेइंग कि अगर आप s में s ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपकी वैल्यू s ही आएगी, यानी जीरो प्लस जीरो वुड रिजल्ट टू जीरो एंड वन प्लस वन वुड रिजल्ट टू वन. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज ये क्या है, जीरो प्लस जीरो इज जीरो एंड वन प्लस वन इज वन. Hence for this one, option number A is the correct one because this is the incorrect Boolean statement regarding the OR loss. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.